IPC or the intermediate level of examination. And then you can start your studies for your final course. Now, this final course, and of course, after along with registering for your final course, you have to compulsorily undergo 3 years of articleship training under a chartered accountant. So, when you are completing your graduation in those 3 years, you have already undergone a soft skills training course and the IT training course. You have cleared your intermediate examination or the IPC examination, and you are already working in a chartered accountancy office. And immediately within 1.5 years of completing your graduation, if suppose you clear all the examinations, you will be a full-fledged chartered accountant. And let me tell you that the fees for these courses is very minimal compared to the high fees which are charged by the MBA courses. Of course, MBA is also a good option for the commerce students, but considering that if suppose somebody is looking at funds being a major criteria for selecting a course, with this course you have to make a minimum investment as far as fees is concerned. In fact, when you are working as an article, you earn. This is a course in which you earn. You don't have to pay. Of course, what you earn, that you will pay. Okay? Now, if suppose some student has not undertaken the chartered accountancy course after his 12th, he can do it by the direct entry route after completing his graduation. So if suppose somebody has completed his graduation, and this graduation he has completed with 55% or more in commerce and 60% or more in some other science or arts, he can still directly become a student of the chartered accountancy course immediately, and he doesn't have to go through the foundation course thing. If you are a graduate, you can get direct entry provided you are having more than 55% in commerce and more than 60% in non-commerce graduation. You have to undergo the soft skills training, 3 years articleship, and then of course the final examination. And before you appear for your final examination, you have to undergo again a soft skills training at the exit point. Now, I would request to change the slide now. Now, these are 3 professional courses in India which are being conducted, these 3 courses have been instituted by a special act of the Parliament. First, the Institute of Chartered Accountants of India, which is administering the chartered accountancy course. The Institute of Cost Accountants of India, which is administering the cost accountancy course. And the Institute of Company Secretary of India, which is administering the company secretary course. Basically, all these 3 courses follow a similar flow. It means immediately after your 12th, it means the 12th people give in the month of February or March. Immediately after that, in the month of June, you can appear for the entrance test of these examinations. My advice to young students is that challenge yourself. After you have completed your 12th, appear for the entrance test or the foundation course test of all the 3 institutes. The syllabus is nearly the same. For nearly the same studies, you can appear for all the 3 entrance tests. And then clear all the 3 entrance tests, and then you have a choice. Suppose somebody has just appeared for the foundation course examination of the Institute of Chartered Accountants of India. He has not appeared for, suppose, ICSI entrance test. He fails, suppose, in foundation course examination. Then what? He has to wait another 6 months to appear for another entrance test. No, don't waste your time. Appear for all the 3 entrance tests, if not 3, at least 2 entrance tests. And then, along with your graduation, you start. This may be a pathway, you start your studies. Of course, as Anfal is also undertaking the aptitude test, the aptitude test stage is going to come before selecting. But my advice is that you give the entrance test of all these 3 institutes and you complete at least 50% of the course of these institutes along with your graduation, so that your day is well utilized. In the morning, you are attending your college and your lectures. And then for after in the second half of the day, post lunch,
you can use it for your studies of either the company secretary or the Institute of Chartered Accountants or the Institute of Cost Accountants. So it is very necessary that we become professionals by either of these routes, and all these three, because they are conducted but directly by an act of the parliament, the cost involved is very less, which is very important for our community students. Then I would request to again change the slide. And another very lucrative option for commerce students is studying law. Now, this law, again, you have an entry into law after your 12th standard, and you can do your law even after the completing your graduation. If you want to appear for your law examination after your 12th standard, you have to appear. For those students in Maharashtra, they have to appear for MHCET. Of course, all the states have their own entrance test. And then you have to undergo a 5-year LLB course. If you are doing after graduation, you have to again now have to appear for an entrance test for law. Of course, the syllabus for the entrance test for law after 12th and after graduation is different. One paper is less in the entrance test if you are giving after graduation. This graduation can again be in any field, in art, science, and commerce, but then your LLB course will be of 3 years. So if you are planning to do your law, you start immediately after 12th, you will become a lawyer within 5 years. And if you decided after graduation, you will total after 12th, it will take 6 years. If you have a potential, or you can say an aptitude for studying law, I would suggest that along with law, you do your ICSI. If you are suppose not very good in figures, accountancy, then you take the combination of ICSI, that is Institute of Company Secretary, you become a specialist in company law, and you do your law. So, that will have a compatibility with you. And lastly, I would like to talk about another evergreen option for commerce students. That is the civil services examination. Yeah, I can request for a change of slide. Now, this civil service examinations, it is conducted in 3 phases. The preliminary examination, it is consisting of 2 papers, objective type papers. This is held in June every year. The results are announced in August. But although it is held in June, it is normally 1 year before that the preparation starts. And this examination is for graduates, not after your 12th, you do your graduation. After graduation, you can go for this. Anfal is also supporting this because this is the need of the time, that we have more people into administrative services of the government. Then after that, a main examination is there of 9 papers. This is not an objective type paper. This is an essay type paper. 2 papers are qualifying papers. It means if you clear those papers only, then the next 7 papers are going to be correct. This examination is held in October. So, if say, for example, 4-5 lakh students are appearing for preliminary examination, and hardly, suppose 15,000 students out of that, they will appear for the main examination. Of course, its results are then announced in the month of January. And then finally, a personality test and an interview is conducted in March, and the results are out by May. These seats are around, suppose, 1,000 or 2,000 seats, the final seat selection which is done. So it starts with 5 lakh students, and ultimately, suppose around 1,000 or 2,000 students get selected. And it is considered among the most difficult tests in India. But what I'm saying is, once you are preparing for this, you are automatically preparing for other government examinations also. Like, in India, you have a dual structure of state and center. So the state government itself requires government servants. So if you are, suppose the civil service examination is considered from the center. But every state, now for the state of Maharashtra, state of Uttar Pradesh, the state of Gujarat will have its own service commission, and they have their own examination. Once you are preparing for this main examination, you automatically are preparing for these other examinations also, and you can give these examinations also. And
along with Anfal, there are other government institutes also. Now, again, I'm talking about these government institutes here in Mumbai and in Maharashtra. Please change the slide. Now, suppose the State Institute for Administrative Careers is there in Mumbai, and there are other pre-IAS training centers in Nasik, Kolhapur, Aurangabad, Amravati, and Nagpur. Likewise, state-wise, there will be other, suppose, institutes which are, say, for example, encouraging students to take up a career in IAS studies. Now, these are the different dates on which these have been established. These institutes which are there, these are government-sponsored institutes. In these institutes, now, for example, the first institute, which is the State Institute of Administrative Careers in Mumbai, it is having 10% reservation for minorities, for Muslims. Presently, the director of this institute, I know him personally, he has told me that, hardly any Muslim students are coming. Those seats are going waste. So, at one end, of course, suppose in our community, we have organizations like Anfal and even other organizations are there who are encouraging students, who are, suppose, supporting financially the students to prepare for these careers. And the government itself is also offering to Muslim students that you can come and join over here. They will take care of all your hostel facilities, studying facilities. If you are not in Bombay, you can just come and stay over here. Library facilities, Wi-Fi facilities. You can just change the slides. Yeah, these are the age limits in which you can appear for these examinations. Yeah, change the slide. Now, this institute, the State Government of India, Maharashtra Institute, they are having a common entrance test for selection, which the students of other communities are appearing for these tests, and they are taking the advantage which is given by the government of Maharashtra to appear for these courses. But unfortunately, nobody from our community is doing it. So you have to, now they have already announced that, okay, suppose for this year they have announced, if, say, for example, if somebody is going on their website and applying as a Muslim, you will get, suppose, a 10% reservation is there. We are not taking advantage of it. So I would request those of you who are planning to go for civil services after your graduation, you please consider this as an option. And of course, our suppose NGOs are there in our community who will help. But if government is giving some help, perhaps the support which is given by our community NGOs, that can be used for some other eligible candidate. So just go to the next slide. Now, this is the facilities which are given by the government in this particular institute. Free coaching, free library facility, stipend is given 4,000 rupees per month. What else do you want? So all your pocket expenses are taken care of. Free Wi-Fi facility, free hostel facility, virtual classroom, computer labs, everything is given to the students so that they come up and they appear. So around, say, for example, they have around 140 seats in Bombay, 10 seats are reserved for Muslims, and you are even eligible for other open category seats. So this is something which we have not been utilizing, and we need to leverage about these opportunities which are available for Muslim students. Now, this, whatever I have mentioned about the traditionally evergreen courses in commerce. I now suppose pass on the baton to my other younger colleagues who will talk about more non-conventional areas and the new areas in commerce which our students can consider taking up as a career. Thank you very much. Thank you so much, Ashfaque sir. This was brilliant, because me being a science student, for me, commerce was like ending only in accountancy. And today I got a new perspective altogether about commerce. So thank you so much for your guidance and assistance in coaching. अगर आप लोगों के पास कोई भी सवालात हैं, आप अपने सवालात पार्क करके रखें, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप चैट विंडो में भी डाल सकते हैं. हमारे कलीग्स जो ऑनलाइन चैट विंडो संभाल रहे हैं वो आपके क्वेश्चंस को आंसर देंगे. अगर इन केस हमको और इन्फॉर्मेशन लगती है तो हम लोग अशफाक सर के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको आंसर देंगे.
ये सेशन कुछ देर और जारी रहेगा, तो आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस, इट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। हमारे पास और दो गेस्ट हैं, मोहम्मद अली देवजानी भाई, हु इज आवर नेक्स्ट गेस्ट, और उसके बाद हमारे साथ हैं जफर जीवानी भाई। सो पहले मैं मोहम्मद अली देवजानी भाई को आपके सामने लाना चाहता हूं। मोहम्मद अली भाई जो हैं खुद एक सीए हैं, और जैसे कि सर ने कहा कि यंगर कलीग हैं, और इस वक्त वो वॉल्ट डिज्नी कंपनी में काम कर रहे हैं। उनके पास डाइवर्स कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, कंसल्टिंग, एडवाइजरी एंड एश्योरेंस सर्विसेज के एक्सपीरियंस हैं, और फिलहाल वो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के हेड हैं डिज्नी स्टार में, और उन्होंने इंटर्नशिप बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और जेपी मॉर्गन चेस के साथ की है। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद अली भाई, आप यहाँ पर हैं हमारे साथ। हमारे जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास करीबन 100 के ऊपर लोग यहाँ पे इस वेबिनार में अवेलेबल हैं, और कई लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। तो मोहम्मद अली भाई, अगर आप हम सबको एनलाइटन करना चाहें और करियर ऑप्शंस जहां से यू टेक ओवर द बैटन फ्रॉम अशफाक सर। थैंक यू मोहम्मद अली भाई, यू कैन Thank you कंटिन्यू। so much, Anwar bhai. Thank you so much, Ashfaque bhai. Sure. So, जैसा अशफाक सर ने बताया कि सीए हैज ऑलवेज बीन द एवरग्रीन ऑप्शन। मैं अब कुछ नॉन कन्वेंशनल इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में बात करना चाहूँगा। देयर आर अ लॉट ऑफ सच कोर्सेज, बट मैंने 5 काफ़ी प्रोमिनेंट कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं। दीज आर इंटरनेशनल कोर्सेज जिसकी डिमांड स्लोली इंडिया में भी बढ़ रही है, एंड दीज आर बेटर ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू स्टूडेंट्स राइट नाउ. Prominent among that is CPA. CPA is Certified Public Accountant. जैसा इंडिया में Chartered Accountancy course है, वैसा CPA is the Chartered Accountant of US and Canada. Okay, so CPA is similar to CA, but CPA अगर आप choose करते हैं तो you will be able to have a global outlook. So Indian CAs are expert in Indian accountancy, Indian taxation, Indian law. CPA, if you're doing from CPA US Institute, you would be an expert with US laws. If you're doing a CPA Canada, you would be expert with CPA Canada laws. So ये CPA course में 4 exams होती है, 4 levels है, जिसको complete करने में on an average student would take 12 to 16 months. और ये course करने का approximate 2 to 3 lakhs का expense है, and this excludes tuition fees. This is just for the course registration and the exam fees. While if I have to talk more about CPA, तो ये 50% multi-choice questions होंगे and 50% subjective होगा. So it's not just going to be आपको Q&A लिखना है या essay type questions लिखना है, आपको objective questions भी होंगे इसके अंदर आपको subjective questions भी पूछे जाएंगे. Passing percentage की बात अगर मैं करूँ तो इट्स रफली अराउंड इन द रेंज ऑफ 50%. सीपीए स्टार्ट करने के लिए आपको आपका बैचलर्स कंप्लीट कर लेना है, एंड सिंस दिस सीपीए इज द प्राइमरी अकाउंटिंग गवर्निंग बॉडी एंड द अकाउंटिंग प्रोफेशन फॉर यूएस एंड कनाडा, हर इंस्टीट्यूट का एक मेमोरेंडम साइन हुआ है which allows people from different countries to practice into different regions as well. So वैसे ही Indian CAs need to apply for a CPA Canada or a CPA US, तो उन्हें कुछ सारे exemptions भी मिलते हैं. So अगर for example if an Indian CA wants to expand his reach into US or Canada, he can apply for a CPA Canada. He just needs to appear for 2 examinations. So जैसा CPA US और कनाडा है, वैसे काफी सारे रीजन्स के अलग अलग CPA है. यू विल हैव CPA ऑस्ट्रेलिया, CPA न्यूजीलैंड, CPA आयरलैंड, पाकिस्तान, एक्सेट्रा. मूविंग ऑन, बढ़ते हैं CFA की तरफ. CFA इज प्राइमरीली एन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन कोर्स. यू वुड बी फोकसिंग अ लॉट ऑन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक, इक्विटी, hedge funds, private equity. CFA is again driven by an institute which is based out of the US. CFA के अभी 3 levels है, जिसको complete करने में on an average आपको 18 to 24 months का time जाएगा, and the approximate cost involved in this is again 3 to 4 lakh rupees.
For you to commence your CFA, आपको bachelor's के last year में या after bachelor's, it's more preferable because the level of commitment involved in doing CFA is slightly higher. Again, if I talk about scholarship options, तो CFA institute की खुद की काफी सारी scholarship options है, since it is one of the most expensive courses under the commerce stream. So the institute itself provides a lot of access and need-based scholarships. And again, इसको यानी अगर इस कोर्स के बारे में मैं थोड़ी और बात करूं तो इसमें 3 levels है. The first level is just MCQs, which is multiple choice questions. आपको objective questions रहेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे and you'll have to just select one, and that's how it's going to be. Similarly, level 2 भी वैसा है. Level 3 is subjective in nature. वहां आपको Q&A ऐसे फॉर्म में आंसर्स लिखने हैं. CFA जैसा US institute है वैसा we have CFA in India as well, which is driven by the Indian CFA Institute. However, in terms of career mobility, in terms of career options, CFA US is highly recommended. Moving on to CMA, this stands for Cost Management Accountant. It's slightly easier compared to CPA and CFA. You can start your CMA right after your bachelor's. आप graduation complete करने के बाद आप CMA start कर सकते हो. इसके 2 levels है. आपको ये complete करने में roughly 6 to 9 months लगेगा, and the cost involved is 1.5 to 2 lakhs. However, आपको चार्टर लेने के लिए यानी ये डिग्री कंप्लीट करने के लिए एग्जाम के बाद आपको 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेट करना है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देन ओनली यू वुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ द CMA US Institute. Talking about FRM, which is the Financial Risk Management course, this is under Global Association of Risk Professionals. Again, ये course है which is again run by an institute based out of US, जिसके 2 levels है. आप इसको 6 से 9 महीने में complete कर सकते हैं with an approximate cost of 1.5 to 2 lakhs. इस course की ये खास बात है कि आपको ये course में जो 2 levels है, you can simultaneously give these 2 levels. यानी आप दोनों एग्जाम्स के लिए साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं. लेवल 1 के अंदर आपको 100 MCQ क्वेश्चंस हो गए, लेवल 2 के अंदर आपको 80 MCQ क्वेश्चंस हो गए, एंड आप आइडियली कोई भी पार्ट अपीयर कर सकते हैं, बट आपका पार्ट 2 इवैल्यूएट तभी होगा जब आप पार्ट 1 क्लियर करेंगे. सो FRM is slightly flexible if I have to talk. Again, इसके अंदर you can start this course after 12th, unlike courses like CPA, CFA, CMA. आप FRM 12th के बाद start कर सकते हो directly. However, to become a member of FRM, आपको 2 years of work experience in the field of risk management demonstrate करना. Now, coming to the most discussed qualification among the non-conventional courses that we have is the ACCA, which is Association of Chartered Certified Accountants. This is a UK-based program. It has a global outlook, and it has of lately been started accepted in the regions of India, Canada, Singapore, UAE. ACCA, you can start after your 12th standard. You need a minimum of 65% in your maths or accounts or English, and 50% in other subjects. To be eligible to start ACCA, ACCA के भी 3 levels है, जिसके अंदर you have to appear for 13 papers. The average cost of doing ACCA will be approximate 3 to 4 lakhs. Now, ACCA and CA के बीच में generally there's a lot of confusion के कौन सा select करना चाहिए, कौन सा better है. तो मैं एक example देना चाहूँगा इस चीज को लेके कि CAs are considered experts in India. जैसा CPA US का expert है, Indian CAs are experts in India. ACCA, since it's a UK-based institute, the course curriculum is designed more globally for them. Hence, it has a global outlook. Now, example is कि if अगर कोई normal बीमारी हुई है, जैसे सर्दी जुकाम, आप कोई भी फैमिली डॉक्टर के पास जाके इस चीज का इलाज करा सकते हैं. बट हाउएवर, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी हुई है, यू वुड वांट टू गो टू अ स्पेशलिस्ट
so that आपको वो proper guidance दे सके and could properly treat you. So similar is the case. ACCAs come in handy with a lot of general finance career options that are available. But when it comes to signing of your audit reports, a lot of signing authorities, ACCAs do not have in the region of India. However, ACCAs have signing authority in the region of UK, Dubai, and Singapore. Also, we have memorandums signed between the CA Institute of India and the ACCA Institute. So, अगर आप CA complete कर लेते हैं, and if you still want to pursue ACCA, you get an exemption of 9 papers out of 13 papers. So, for example, आपको ACCA के बाद आपको सिर्फ 4 पेपर और देने हैं, and then you are an ACCA member as well. Similarly, ACCA और CPA Canada का भी एक memorandum था, which has now expired. But after ACCA, if you want to do CPA Canada, you will have to go through 6 steps, which involves 2 core modules, 2 elective modules, 2 capstone projects, and a final examination. So these are the broad, non-conventional international courses. Now moving on to post-graduation courses. अगर आप CA नहीं कर रहे या आप कोई भी international course नहीं कर रहे हैं, you still have a lot of options. Prominent among them again is the post-graduation courses that are listed in front of your screen right now. One of them is obviously MCOM, which is very popular, very well known. Then it's Masters in Finance, Masters in Management. There is MBA, there's MAC, PGDM, a lot of diplomas and certificate courses. Masters in Finance is a new course which is now being, coming a lot in the limelight. काफी recognition मिल रहा है because इसका पूरा focus finance की specialization की तरफ हो जाता है, जहां आप MCOM में एक generic masters अर्न कर रहे हैं या सीख रहे हैं. मास्टर्स इन फाइनेंस उसीलिए आपको एक फाइनेंशियल करियर की तरफ शेप करता है. सिमिलरली अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है तो आप मास्टर्स इन मैनेजमेंट की मूव कर सकते हैं. ऑब्वियसली MBA इज द मोस्ट प्रोमिनेंट चॉइस. MBA में भी बहुत सारे टाइप्स है. You have options of full time, you have an option of part time. There are courses which are of 1 year tenure, 2 year tenure. There are a lot of flexible courses which are available as well. And then obviously there's an executive MBA. Now MBA related काफी सारी institutes आज open है. हमें अगर MBA करना भी है, we should target tier 1, यानी जो सबसे अच्छी institutes है, हमें उस पे ज्यादा focus करना है. So for example, if I have to talk about tier 1 institutes in India, it is going to be the Indian Institute of Management, which is based out of Ahmedabad, Bangalore, or Calcutta. There is Indian School of Business, then there is SP Jain, there is XLRI, there is Jamnalal Bajaj, and to the likes of that. So ISB की अगर मैं थोड़ा और बात करूं, ISB is a 1-year course, and generally अगर आपको 1-year MBA target करना है, so they want you to have some work experience. So आपको bachelor's complete करने के बाद 1 साल या 2 साल, prominently 2 साल आपको कोई organization join करके work experience gain करना है, and then you can move towards your masters, and that will help you reach another level or get a promotion in your current job. A new course that has come up off lately is Masters in Accounts. Masters in Accounts is basically a US-driven Masters, which is a STEM certified Masters. जिसके बाद आपको 3 years की open work permit मिलती है to stay and reside in the United States. Again, the postgraduate diploma in management is similar to MBA. Schools like ISB would not be able to issue an MBA. They would issue you a PGDM. So if you're confused between an MBA and PGDM, it's primarily the same thing. It's just the issuing authority is different. Apart from all of this, there are a lot of diplomas that can be done. International financial reporting हो गया, जैसे finance management हो गया, business accounts हो गया. And there are a lot of new certificates that have come up as well. Next slide, please. So these are the certificate courses. अगर आपने अपना बैचलर्स कर लिया है या आपने मास्टर्स कर लिया है या आप अभी
कोई कोर्स कर रहे हैं and you want to learn more about something in the field of commerce, these certificate courses are short-term certificate courses, like 3 to 6 months, and they cost you in the range of 10 to 50,000 per certificate. And you could do this to learn more, enhance your knowledge, and probably use this in the job that you're doing to excel in your career as well. So this was all from my side. Question and answers probably we will take at the end of the session. So over to you, Anwar bhai. Thank you. Thank you so much, Mohammed Ali bhai. Mohammed Ali bhai, in my company, I have seen people doing a Lean Six Sigma green belt, a black belt, people doing PMP, that is project management as well, coming from the commerce background. So yeah, these are some more upcoming digital marketing courses kind of thing. So That's a lot it. of new avenues are open here. Amazing. This is like outstanding. A lot of people who have interest in going out of India and learning and studying and getting post graduation and all. Thank you so much, Mohammed Ali bhai. I'm like, these Thank are you. like outstanding. Thank you. I'm sure we all are still connected and we all are enjoying the session and learning. अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हमें मैसेज डालते रहें ताकि हम उसका ट्रैक रख सकें, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होंगे तो फिर वी कैन टेक सम क्वेश्चंस देयर एज वेल. अभी मैं दावत देता हूं जफर जीवानी भाई. Zaffar Jivani bhai is also from the same background, same field, having his niche experience in other courses as well. So basically ये हमको non-conventional courses के बारे में बताएंगे. Zaffar bhai himself is a professional having more than 11 years experience and with a varied track record of handling assignments in financial sectors, specializing in digital banking controls, regulatories, product controls, anti-money laundering, and certified fraud and cryptocurrency investigators. So, Zaffar bhai एक पूरा नया एवेन्यू हमारे सामने खोलने वाले हैं, जो कुछ चीजें जो आज के वक्त के जरूरत है, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और जो फ्रॉड हो रहे हैं आज के तारीख में, और फिर जो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो सवालात हैं और जिस तरह से वो चल रहा है. सो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका जफर भाई को दावत देता हूँ. जफर भाई, यू मे प्लीज प्रोसीड. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद. अस्सलाम वालेकुम सबको. एंड सबसे पहली बात जो आई वुड लाइक टू कन्वे द मैसेज टू द पीपल, यहाँ पे हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि सीए और एमबीए के, हमारे मोहम्मद भाई भी सीए है, अशफाक सर भी सीए है. अब इनकी दोनों के जो इन्होंने कोर्सेज समझा है ये बहुत उम्दा कोर्सेज थे. आप पहले वाली साइड पे चले जाइए प्लीज. सो मेरे को एक जर्नी बतानी थी बेसिकली. इसके पहले वाली स्लाइड पे मोहम्मद भाई, स्लाइड वाला, इसके पहले वाला स्लाइड कर दीजिए. नहीं, इसके पहले वाला फर्स्ट. हाँ, बस यहीं पे रुक जाइए. सो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन इसके लिए दिया जा रहा है कि मैं सेम सिचुएशन में रहा हूँ काफी सालों तक. बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करूँ. बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ग्रेजुएशन बैफ में किया था, जैसे कि अशफाक सर ने ऊपर एक्सप्लेन किया है. उसके बाद मैंने कंपनी में काम किया एंड देन मैंने स्टार्टिंग में अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल भी किया है. उस स्ट्रगल के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में काम मिला है, दैट इज केपीएमजी, एंड देन सिटी बैंक मैंने ज्वाइन किया. बस मैं वहां पे जाके भी यही स्ट्रगल कर रहा था कि हमें प्रमोशन का बहुत स्ट्रेस होता है. मतलब मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी मुझे, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मैंने मेहनत करी है, मैंने सब कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मुझे आगे क्यों बढ़ने नहीं मिल रहा है. सो हमारे पास फिर हम जाते हैं, चलो वापस स्टडी करते हैं, तो वही सेम ट्रेडिशनल कोर्सेज लाइक सीए और एमबीए हमारे पास आ जाते हैं. और इंटरनेशनल कोर्सेज जो भी मोहम्मद भाई ने ऊपर एक्सप्लेन किया है, प्रीटी एक्सपेंसिव, अगेन 3 to 4 लाख रुपीज. तो कैसे करें, क्या करें. बहुत समझने करने के बाद मैंने 7 years अपना करियर अपने जॉब पे डाला, थोड़े पैसे जमा किए. फिर मुझे एक सीनियर, मतलब काफी कोई सीनियर पर्सन ने एक्सप्लेन किया था कि आपकी जो फील्ड है, जैसे कि मेरे रिस्क एडवाइजरी जो हमारी फील्ड है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी जो फील्ड है, मुझे इसमें लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चांस मिला था. हमारे से बहुत ब्रदर्स है जो इस फील्ड में है, रिस्क मैनेजमेंट में. इवन मोहम्मद गाजी भाई जो इस फील्ड में है, कहीं ना कहीं बड़ा एक्सेंचर में इज वर्किंग. तो मुझे उन्होंने बोला कि सर्टिफाइड फॉर एग्जामिनर कर लीजिए. मैंने बोला ठीक है. तो मैंने पैसे जमा किए, मैंने बोला चलो मैं ये करूंगा. मैंने अपना कंप्लीट किया. मैंने कंप्लीट करने के बाद देखा कि मेरी डिमांड बढ़ी, मुझे फिर से एक अच्छी जॉब के लिए कॉल आया. मैं केपीएमजी में काफी सालों तक काम किया और मुझे वहाँ पे ग्रोथ मिली. फिर मैंने बोला चलो ठीक है, हम यहाँ पे रुकनी नहीं है, यहाँ पे मेरी अभी रफ्तार रुकेंगे नहीं और हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो मैंने बोला चलो साइबर लॉ में डिप्लोमा कर लेता हूँ. और डिप्लोमा करते करते जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अभी फिनटेक में भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल है. यहाँ पे एडेक्स करके ऑनलाइन है, यूडेमी है,
आपके पास अपग्रेड है, ऐसे बहुत ऑप्शंस है। एक सबसे बहुत उम्दा बात जो मैं कहूंगा यहाँ पे कि हम लोग जितने भी कोर्सेज करेंगे, नथिंग इज अ वेस्ट। हमारी नॉलेज, हमारा एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ये प्लीज समझ के चलिए। आप लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हमारा वेस्ट हो जाएगा, हमें इनकम नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। सिमिलरली फिर उसके बाद मैंने आज की तारीख में समझ लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं डिजिटल बैंकिंग स्पेस में काम कर रहा हूँ। डिजिटल बैंकिंग में तो आप बोलोगे साइंस वाले चाहिए, टेक्नोलॉजी वाले चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे डिजिटल बैंकिंग स्पेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें, जैसे कंप्लायंस है, रिस्क है, आपके प्रोसेसेस है, ये सब चीजें करने के लिए मैं वहां पे बैठा हूँ और उनको बताता हूँ कि रेगुलेटरी मतलब जो आरबीआई है, सेबी है, वो क्या बोलता है कि डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए। सो जैसे कि ऊपर एक एग्जांपल दिया गया था लॉ कोर्स का या कंपनी सेक्रेटरी का, वो लोग भी ये फील्ड में जा सकते हैं। फिर मैंने बोला चलो यहाँ रुकते नहीं है, रफ्तार नहीं, तो मैंने फिर अपना कंप्लीट करके एक इन्वेस्टिगेशन, क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन मैंने कंप्लीट किया, एक सर्टिफिकेशन। सो ये नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज के मैंने ओवरव्यू दिया है। मैं डिटेल में थोड़ा नीचे वाली साइड बाद में जाऊंगा, बट ऊपर दिखा देता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी एक है जो इस तरफ रहती है कि यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स लॉ, मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कॉमर्स अरेना ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे क्या क्या कंपनी के अंदर सेक्रेटरियल वर्क होता है। जैसे कि आप एनएससी बीएससी पे लिस्ट करते हो कंपनी, तो ये सारा कंपनी सेक्रेटरी की तरफ होता है। फिर 3 ईयर लॉ डिग्री है। फिर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेटर, ये एक ऐसा है कि आज की तारीख में आरबीआई ने भी अनाउंस कर दिया है कि आपके पास डिजिटल करेंसी आने वाली है। सो ये कोर्स उस अरेना में ले जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर डिजिटल करेंसी आएगी तो फ्रॉड भी हो गए, तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, तो ये एक सर्टिफिकेशन आपको वो समझाता है। सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर जो मैंने पहले किया था, ये पूरा अरेना है। ये सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर बनाया गया है विद द सीपीए, एसीसीए और फिर 4 इंस्टीट्यूट ने मिलकर एक छोटा सा एक कोर्स मतलब डिजाइन किया है, जिसमें स्पेशलाइज ओनली फ्रॉड के बारे में बात करते हैं और कुछ नहीं, कि आपके पैसे को लूटने से कैसे बचाया जाए, कंपनी को ये बताया जाता है। फिर आपके पास है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, यहाँ पे अगेन सीसा की बात करते हैं। ये एक अच्छा कोर्स है जहाँ पे आपको कंपनीज में एक अच्छे सिस्टम इंफॉर्मेशन वाला जो एनालिटिक टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है। अब ये मैंने एमकॉम यहाँ पे इसलिए डाला कि बहुत सारे डिग्री जो हम इंटरनेशनल कोर्सेज करते हैं वहां पे आपको 16 डिग्री कंसेप्ट होता है, तो एमकॉम आपको एक एज हेल्प करता है। कभी कभार जैसे कि मास्टर्स डिग्री आपके पास नहीं होती, उसके लिए भी आपके इंटरनेशनल कोर्सेज कोई ना कोई रुक जाते हैं, जैसे कि मास्टर्स इन फॉरेंसिक्स हो गया, मास्टर्स इन साइबर क्राइम हो गया फ्रॉम द यूएस, तो उसके लिए आपको एक मिनिमम एडवांटेज दे देता है। एमकॉम आप कर ले तो बेहतर रहता है। फिर फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट, अगेन यहाँ पे ये लेके जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ। अब आ जाता है कि हम लोग को बैंकिंग में एंट्री चाहिए, बैंकिंग में एंट्री चाहिए, तो वहां पे कुछ कोर्सेज है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट के कोर्सेज है, 3000, 4000, 5000 आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर 12th ऑल्सो। इसमें एक है जेएआईबी एंड सीएआईबी, ये आप कर सकते हो। इसमें आपको बैंकिंग के लिए एंट्री लेवल जॉब मिलता है, फिर आगे जाके आपको अपने आप को एनहांस करना ही पड़ेगा, मतलब यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, रफ्तार रोकनी नहीं है, बस इतना ही कहूंगा। उसके बाद है फॉर डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स में आ गया, फिनटेक में आ गया, ये एसपीजे यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आते हैं जहाँ पे लोग समझाते हैं, कुछ एक्सपेंसिव है, कुछ नॉन एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको थोड़ा सा जो मेरा बैकग्राउंड है उसके तरफ लेके जाके आपको बताता हूँ कि और कैसे कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे और मैंने क्या चुना। सो एग्जैक्टली सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, स्कोप ऑफ स्टडीज क्या क्या है इसके अंदर, अकाउंटिंग, लॉ, इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड मैनेजमेंट, फ्रॉड को रोकना कैसे है, कंपनी को नुकसान से कैसे बचाया जाए। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि उनको रेपुटेशनल रिस्क, आप कितनी भी बड़ी कंपनी खड़ी कर लो, आपने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, बट अगर आपकी कंपनी का रेपुटेशन अगर नहीं रहेगा या संभाला नहीं जाएगा कुछ फ्रॉड की वजह से, आपकी कंपनी ओवरनाइट डूब सकती है। सो ये हमारा जो अरेना है वो बहुत क्रिटिकल है, हम लोग बहुत अच्छे एक क्रिटिकल जोन में काम करते हैं और यहाँ पे हमेशा एक स्ट्रेस रहता ही है एनवायरमेंट, बिकॉज यू आर लीडिंग अ रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, मतलब आपके एक इंसान की, आपकी इज्जत की बात कर रही है, उस लेवल की कंपनी की इज्जत की बात हो रही है। ये कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए रहता है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग, ऑडिट, फ्रॉड रिलेशन, कंप्लायंस, रिस्क एंड लॉ, ऐसा कोई बैकग्राउंड आपका हो तो आप कर सकते हो। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरी जर्नी में केपीएमजी का वो एक्सपीरियंस देके मैं आगे बढ़ा हूँ, एंड देन 1 साल के अंदर ये कंप्लीट होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इज द फीस। अब अभी हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है चलो ये तो हमने कर लिया, हमें इसमें जॉब कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने वो दिया है कि ऑडिट में है, कंप्लायंस में है, विजिलेंस है, रिस्क है, इन्वेस्टिगेशन है, कंट्रोल्स है, इन एनी सेक्टर। जब मैं एनी सेक्टर बोलता हूँ तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बैंक, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कॉमर्स इंडस्ट्री, ये आपका फार्मास्यूटिकल तक भी जाता है, ये आपका कार्गो साइड में आप जाते हो वहां तक भी जाता है, आपको ये लिमिट नहीं करता है। ये सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर इज अ वेरी ब्रॉड गैमेट ऑफ फ्रॉड, कहाँ कहाँ होता है, हर जगह पे जहाँ पे फ्रॉड है उसको कंसोलिडेट करके ये स्पेशलाइज कोर्स बनाया गया है। सो अरेनाज बहुत ओपन है, बस हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा गाइडेंस की तरफ बढ़ते हैं।
सेकेंड कोर्स है जो है एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट। अगेन ये वाला बहुत स्पेसिफाइड है टुवर्ड्स द अरेना ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कि आप कोई स्टॉक मार्केट में हो, या फिर आप कोई टैक्स डिपार्टमेंट में हो, या फिर आप कोई बैंक सेक्टर में काम करते हो। तो इसमें फाइनेंशियल क्राइम, AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड प्रिवेंशन, टैक्स, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, ये सब चीजें इनका स्कोप है, ये यहाँ पे ये डिस्कस होता है। अगेन सिमिलर एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। फीस इसकी अराउंड 80 के अप्रॉक्स होती है, 1 ईयर का आपको टाइम मिलता है करने के लिए। बट ये सब जो है ये 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आप गेन कर पाओगे, बिकॉज देन उनको एक जरूरत है, उन्होंने अपनी मिनिमम क्राइटेरिया बनाई हुई है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड में मूव कीजिए। सो अभी यहाँ पे जैसे कि ऊपर भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हमने बताया था, ये सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि मोहम्मद गाजी भाई ने बताया था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है कि आज की तारीख में बहुत से लोग ब्लैक मनी से ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब वो ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनको ऑब्वियसली ऑप्शंस अवेलेबल है। अब उस ऑप्शंस को रोकने के लिए भी कोई स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो उसी तरह से ये पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेशन है ये आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है। इसमें डिस्कस होती है अकाउंटिंग, लॉ, इन्वेस्टिगेशन और फ्रॉड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली स्पेसिफिक फोकस रहता है टुवर्ड्स द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेस, जैसे कि बाहर से कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके इंडिया में पैसे लाना चाहता है, कोई टेररिस्ट अटैक करके या कुछ भी। आज की तारीख में हम जब देखते हैं टेररिस्ट अटैक तो उनको फंडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये वो सब डायरेक्शन में ये स्टडी और स्पेशलाइजेशन होता है। इसकी एलिजिबिलिटी भी ग्रेजुएशन, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, ऑडिट, फ्रॉड और इसी तरह से ले जाता है। ये सेम है बट इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है और इसकी वैल्यू एंड वेटेज बैंकिंग में बहुत ज्यादा है। एक बहुत ही एक एडवांटेजेस एस्पेक्ट होता है कि इसमें बैंक में अगर आप ये कंप्लीट करते हो सर्टिफिकेशन तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर का एक रोल जो सबसे टॉप पोजीशन होती है कंप्लायंस साइड पे इन दी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेस, वो मिलती है आगे जाके कुछ एक्सपीरियंस के बाद। और ये उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है एक टाइम के बाद, वो लोग को करना ही पड़ता है। इस जरूरी नहीं है कि आप जॉब करते करते ऑन दी स्पॉट करके जाइए इसको, आप एक्सपीरियंस लेते लेते भी आगे बढ़ सकते हो। आगे इसका स्पेस वही है, ऑडिट, कंप्लायंस, विजिलेंस, इस सब जगह पे ये आपको अरेनाज ओपन करता है, बट बैंकिंग सेक्टर मेजरली। और इसी तरह से ये फोर्थ वाला जो मैंने अभी जो रिसेंटली एक्सप्लोर किया है, दैट इज सर्टिफाइड क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेटर, ये ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस ग्रुप से किया था। आजकल हम लोग बिटकॉइन की तरफ बहुत जा रहे हैं, डार्क वेब बहुत होता है, जैसे कि आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ जाता है टूवर्ड्स सॉरी आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ जाता है टुवर्ड्स द अरेना ऑफ गेटिंग इनटू डिजिटल करेंसी। सो डिजिटल करेंसी में भी हम लोग देखेंगे आज की तारीख में इंडिया में बहुत स्कोप आया है। पहले बाहर से काफी स्कोप चल रहा है कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें, नहीं करें, क्या करें। सो इसमें भी बहुत फ्रॉड्स होते हैं कि आप पैसा अपना डालते हो डिजिटल करेंसी की तरफ, बट वो पैसा कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे फ्रॉड या मैनिपुलेट करके डालता है, तो हम डरते हैं। तो उस चीजों को रोकने के लिए सर्टिफिकेशन प्लान्ड है, उस डायरेक्शन में ही हमें ले जाता है। सो ग्रेजुएशन अगेन 2-3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसकी फीस अभी फिलहाल सबसे लोअर स्केल पे है, 70,000 पे है, बिकॉज अभी नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ ही वक्त पहले। तो ये आप जितना जल्दी ग्रैब करेंगे उतना जल्दी अच्छा होगा, फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है मैं उनके लिए ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा। और जो एंट्री लेवल पे है उनके लिए थोड़ा वेट पीरियड होना चाहिए, बिकॉज देन दे हैव टू लर्न समथिंग एंड गेट इनटू अ जॉब फर्स्ट। अगेन दिस अरेना इज टुवर्ड्स द ऑडिट, कंप्लायंस, विजिलेंस, द सेम सेक्टर। सो आपके इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मोहम्मद गाजी भाई आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन क्या होगा। आई थिंक मेरा यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस पे शेयर कर रहा हूँ बस। नहीं, जबरदस्त जफर भाई, मतलब आपका जो सफर है ना, जफर भाई का जो सफर है ना वो काबिल तारीफ है। मतलब आपने जो जिस लेवल से शुरू किया और जहां तक पहुंचा और किस तरह से आपने अपनी जर्नी बताई, ये हम सब के लिए एक बहुत ही इबरत का मकाम है। क्योंकि अभी जैसे मोहम्मद अली भाई या अशफाक सर थे, they went through that entire thing and they were right CA and there, but you started from graduation and then you struggled and then KPMG and how you went ahead. So इसमें एक मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है जो मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ कि जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये बहुत फेमस कोट है, फारसी कोट है उसका, ये है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस दिन हमको ऐसा लगता है ना कि हमने सब सीख लिया तो हमारा जीतना बंद हो जाता है, क्योंकि फिर वहां हमारी फुल स्टॉप लग जाता है लाइफ में, हमारी एजुकेशन में। बट देन दिस वाज अमेजिंग। आपने जो कोर्सेज बताए, मतलब इतना एनलाइटन किया कि मतलब किस ऐसा अब लग नहीं रहा है कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 12th या ग्रेजुएशन एक हद है। नहीं, आपके पास एक पूरी दुनिया खुली हुई है और पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है, इतने सारे कोर्सेज हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इतना बड़ा सरदर्द है हम सब के लिए।
फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, हर कोई मतलब आज खड़े खड़े आप देखें 2-3 न्यूज रोज के आते हैं कि किसी का 12 लाख का फ्रॉड हो गया, किसी का 5 लाख का फ्रॉड हो गया। बहुत ही सिंपल सा एक मैसेज जाता है, लोग क्लिक कर देते हैं और निकल जाते हैं। बेशक। और एट द सेम टाइम ये तो इंडिविजुअल हो गया, कंपनी के लिए कितना बड़ा रेपुटेशन की बात है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर एक्सेंचर के पास ऐसा कोई, हम लोग के जिस तरह से वो सब फिशिंग के कोर्सेज होते हैं ईमेल के इस तरह के, कि एक गलती से एक ईमेल पे क्लिक हो गया, इतना बड़ा रैंसमवेयर डाल दिया जाता है और जब तक आप उनको रैंसम नहीं देंगे तब तक वो निकाला वो हटता नहीं है। तो मतलब कितना बड़ा रेपुटेशन की बात है, मतलब इतने हजारों वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट ब्रांड्स और क्लाइंट्स हैं, मतलब उनपे क्या असर पड़ेगा। सो थैंक यू जफर भाई, थैंक यू अशफाक भाई, थैंक यू मोहम्मद अली भाई। टीम मतलब पार्टिसिपेंट्स गेट रेडी, हम लोग Q&A की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग अपने हैंड रेस करेंगे जिसके पास जो क्वेश्चन है, जिन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है वो सब्र करें, उनके आंसर दे दिए जाएंगे। बाकी जिनको सवाल है वो हाथ उठाएंगे, हमारे जो टीम जो बैकएंड टीम में बैठी हुई है वो आपको सिलेक्ट करेगी, आपको अनम्यूट करेगी, उसके बाद अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी लोग अपना क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकते हैं। और अगर जिसके पास अगर सफदर भाई इफ यू अवेलेबल कैन यू जस्ट पेस्ट द फीडबैक लिंक, अगर आप लोग जाना चाहें तो प्लीज ये फीडबैक लिंक पे क्लिक करके फीडबैक हमें दे सकते हैं इस पूरे सेशन का, ताकि हम आगे बढ़ सकें। Safdar bhai, do we have any, OS bhai, Safdar bhai, do we have anybody who is ready to ask questions, and if you are ready to unmute them? किसी को unmute किया है? We have a lot of hands raised. We have Saklan Naqvi hand raised. Anwar bhai, while we are figuring out how to make the people unmute, we already have a lot of questions in the chat, so maybe we can start. Wonderful. I think that's a good way of approaching. Yes, Safdar bhai, because if we'll unmute, we'll have to unmute everybody. There is no way you can you have to do one by one. Then yes, please, अगर आपके पास कोई question है तो we can ask. Okay, all right. So we have a list of questions. The first one is asking about the IT skills जो commerce students को सीखना चाहिए. So this is a question from Suyog Mathurkar at the start of the chat. So maybe that is where we can also start. Thank you, Suyog. I think sir ने बताया है ITCSS करके. Ashfaque साहब, I think this question is for you. I think this is something to do with your complete 4 weeks ITSS course. Yeah, but you know, this course, the IT and the soft skills course is for those who register themselves as CA students. CA student, okay. This question, which I understand, is for a specific IT course which they are asking. So, you know, there are many commerce institutes which are giving training in Tally course. So whatever the locally that any Tally course is available or Excel course is available, because these are the courses which, you know, normally the finance and the accounting professionals would like to be, say, for example, expert in. Okay. Excel in the sense of Microsoft Excel courses. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Anwar, I would just like to add a few things here. Sure. So apart from Excel and Tally, you could probably look at SAP as well. Aajkal Power BI and Power BI data visualization is again a new thing. All the companies would want some form of reports, some form of reports data and dashboards. Correct. Absolutely. So Power BI is a new tool which is freely available by Microsoft. You should learn all these available tools. Wonderful. Thank you, Mohammed Ali bhai, for adding that. So as Mohammed Ali bhai said, Power BI is the go thing. हमारे जो इस level companies like KPMG or Accenture or Capgemini or Infosys or TCS, हम लोग के काम बिना Power BI के नहीं चलते हैं. Management need a dashboard to see how people are performing, और हम लोग को सारे reports लगते हैं और वो reports Power BI में बड़े आसानी से बन जाते हैं. So thank you for bringing that into consideration. So, Mr. Mathurkar, are you still there? आपके question answer हो गया है? ठीक है, I think we can move on. We have a lot of questions. So, yes, Mohammed Safdar bhai, if you have. Thank you, Suyog. Okay, Suyog answer हो गया है.
Perfect. Okay. Yes. So next Safdar bhai. question we have is from Sadiq Hussain Bhai. He's saying, and let me read through the entire message he has. So, hello sir. Currently, I am pursuing MCOM from Lucknow University, planning to give UGC NET exam in upcoming attempt in order to pursue PhD in commerce fields. So he's asking for some valuable advice regarding PhD on how he can crack GRF exams successfully, inshallah. Inshallah. Oh. Who's taking this question? Mohammed Ali bhai, Ashfaque sir, Zaffar bhai. Yeah, I have just got this question from Mr. Sadiq Hussain. Now, Okay. it is very good that, he is planning for his, in the final year MCOM, he's planning for the UGC NET examination, which will make him eligible for junior research fellow or even the post of a college lecturer, a college professor as an assistant professor. And if he is planning to join the teaching line in the long run, then of course he has to do his PhD. Now, for a PhD, then basically, it is much more, instead of giving a general reply, it will be a more specific reply that, suppose if he's doing his MCOM, so he's doing in the MCOM in which specialization, whether it is in accountancy, it is in finance, it is in general management, and then what subject he is taking, and what is his research Specialization. So these are some things which are we can answer to him if suppose individually we are, say, for example, able to connect with him. But of course, Sure. in general, I can just say that of course it is a very bright line, and it has a bright future. Thank you, sir. Mohammed Ali bhai, so Sadiq Hussain bhai, if you have more, if you want more detailed answer, you can write a brief information about what exactly you're looking for. Then we can connect with Ashfaque sir. Apart from this, I think on a general note, this answers your question. Thank you. Yes, Safdar bhai. Yeah, so next one is from Askari Sayyid Bhai. He's asking, is it possible to do CMA and ACCA after graduation? I'll take this one. Yes, you can do both CMA and ACCA after graduation. अगर आपने आपका bachelor's start नहीं किया है, तो आप bachelor's के साथ ACCA कर सकते हैं. For ACCA, the minimum qualification requirement is you need to complete your 12th with 65% marks in maths, accounts, and English, and other subjects. 50% is the minimum score that you need. However, if you're talking about CMA, you need to complete your bachelor's and then you could start your CMA. Thank you, Mohammed Ali bhai. I think pretty straightforward answer. Yeah. Yes, Safdar bhai. Any So other question? there is actually a very similar question from Tafsir Ali Sayyid. She, I think, is asking about the same thing. Graduation के साथ ACCA करें तो कैसा है, अच्छा है या नहीं? So I think this answered this question, her question yeah, as well. Right. Yeah. Okay. So Thank you. next one I can see in the chat is, I think this is also has a very straightforward answer. The question is, I am doing BBA after 12th. In which field can I do MBA? So of course, MBA finance will be one big area. Anything else? Any speakers want to add to that? You could probably look at MBA in marketing, MBA in strategy, right, so on and so forth. So it depends on the fields that you are interested in and would want to build your future. Perfect. Okay. All right. Maybe digital marketing or something like that as well. Sure. Business transformation, digital transformation. Definitely. Yeah. Absolutely. Right. Thank So you. on MBA piece, actually, there are multiple questions. I see another question from Zehra Sayed. She wants to do MBA finance. She's asking, can you suggest me after 12th which course will be beneficial? After graduation, as such, I want to do MBA finance, but then what are the additional courses she can do during her graduation, which is beneficial for her MBA finance? So जैसा अशफाक सर ने बताया था, बैचलर्स में ज़्यादा डिफरेंशिएशंस नहीं है. Obviously, अगर आप finance is the career that you want to choose, so BAF would be the most prominent option, which is bachelor's in accounting and finance. However, you could probably choose BBA as well, which is the most prominent choice because you're doing a master's in business administration, so you would want to do your bachelor's in business administration.
So I Perfect. hope that Thank you. answers. It depends on the Yes. specialization, Hmm. basically. Your area of interest and specialization. Absolutely. Right. Safdar There bhai. is also a specific question on ISB Mumbai. So the question is, it's being said that ISB Mumbai MBA degree is not valuable. Is it so? Please guide. All degrees are valuable. It's just कि हर इंस्टीट्यूट का एक अलग तरीके से पढ़ाने का करिकुलम डिजाइन किया गया है. हर इंस्टीट्यूट अपने जो कोहॉर्ट, जो स्टूडेंट्स को वो एडमिशन देते हैं, वो एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू फिल्टर करके और सिलेक्ट करके करते हैं. सो आइडियली आप जहां से कर रहे हैं एमबीए, वो बहुत मैटर करता है. आईएसबी मुंबई इज अ गुड स्कूल, but you should look at other options if available. And अगर आप मुंबई की बात करें तो there is Jamnalal Bajaj, there is SP Jain, and similarly other colleges available. Thank you, Mohammed Ali sir. और आई थिंक सफदर भाई, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आई थिंक ये आंसर हो जाना चाहिए कि ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई कोर्स है क्या? Trading in the sense equity trading? Equity trading, stock trading. Yeah, so CFA is one of your international courses which is very focused on your equity and derivatives market. CFA. That is one prominent course that is available, which is a chartered financial analyst course. Again, it's a US based course. It has 3 levels, and you could probably So Mohammed भाई, just like would like to add here, यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर अगर कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर करके एक कोर्स आता है, जहाँ पे किसी को अगर एक प्लानर बनना है प्रॉपरली टुवर्ड्स द इक्विटी एंड उनको इंश्योरेंस एंड वो पूरा एक गैमेट मिलता है कि हाउ यू कैन सेल योर मार्केट्स एंड अपने कस्टमर का आप खुद का बेस बना के खुद की ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट करना चाहते हो. सो ये उस तरफ ले जाता है डायरेक्शन में. सिमिलरली एमफी के कुछ कोर्सेज है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ कोर्सेज है, और इसमें सबसे उम्दा चीज जो रखती है सर्टिफिकेशन कोर्सेज एनआईएसएम के भी बहुत सारे हैं, बट आपको सबसे ज्यादा चाहिए होगा उसके अंदर एक्सपीरियंस, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस आपको सर्टिफिकेशन सिर्फ आपको एक नॉलेज दे पाएगी, बट आपका एक्सपीरियंस आपको इवैल्यूएट करेगा टुवर्ड्स दी डायरेक्शन दैट आपको क्या करना है. एंड देन उसके बाद लाइसेंसेस के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं इफ दे वांट टू हैव देयर ओन ब्रोकिंग फर्म्स. थैंक यू जफर भाई. इसमें कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि बिजनेस के रिलेटेड अगर मुझे आगे चल के बिजनेस करना है तो उसके रिलेटेड कोई कोर्स है क्या? सो आई थिंक जफर भाई का ये जवाब उन लोगों का भी क्वेश्चन आंसर करेगा कि वैसे अगर आप एमबीए कर ले, इट्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जरूरी नहीं कि आपको कहीं किसी की नौकरी करके ही बिजनेस एडमिनिस्टर करना है. आप अपना बिजनेस खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तभी आप एमबीए हैं. तो यस, सो जितने भी कोर्सेज बताए जा रहे हैं ये दोनों रिलेटेड है. आप जॉब भी कर सकते हैं कोई कंपनी में, या आप अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं बाय गेनिंग दोज नॉलेजेस. थैंक यू. और कोई सवाल है? हमारे पास अगले 4 मिनट हैं और सवालों का जवाब देने के लिए. सफदर भाई. Yeah, so another question I see is from Kulsum Fatima. Want to become a financial analyst. Finance is the main key, but what are the other topics I could be expert in? I think you already to some extent answered Ruth via the deck, but maybe if speakers can summarize. आई बिलीव फाइनेंशियल एनालिस्ट ये उस तरफ डायरेक्शन में ले जा रहा है जहाँ पे इनको एक मतलब फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल की बात करते हैं. सो सीएफए का एक ऑप्शन जो मोहम्मद भाई ने बताया था, अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग के कुछ कोर्सेज है, अगर उनको फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उस तरफ जाना है. यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस, हम लोग बहुत नैरो थॉट से चलते हैं. फाइनेंस बहुत ब्रॉड है. आपके पास करेंसी है, आपके पास बैंकिंग है, आपके पास ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट्स है, आपके पास ई कॉमर्स है, आपके पास ट्रेड फाइनेंस है. ये सारे होराइजन्स है हमारे पास. इवन अगर आप बैंकिंग, नेवर एंडिंग ऑप्शंस आपको अवेलेबल है. आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा. और फाइनेंशियल एनालिस्ट की अगर स्पेसिफिक बात करें तो बेसिकली सीएफए इज द मोस्ट डिजायर्ड कोर्स, जो बिकॉज वो पूरा ओवरव्यू कवर करता है कि हाउ यू वांट टू बिकम एन एनालिस्ट. मतलब आप बड़ी कंपनी में जाके बताते हो कि फ्यूचर ब्रस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन करके देते हो. इसी के अंदर और एक कोर्स आता है जो बेसिकली मैथमेटिक्स की तरफ ले जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी में एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं. तो अगर आप लोगों को वो भी एक्सप्लोर करना है, बट वो सब ऑप्शन साइंस वालों के लिए है, यहाँ पे नहीं है. बट यू कैन स्टिल एक्सप्लोर कि अगर आपने 12th कंप्लीट किया और आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो आप उसके ऑप्शंस देख सकते हैं.
थैंक यू जफर सर। और जफर सर और अशफाक सर और मोहम्मद अली सर, ज्यादातर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 13th में हैं या स्टैंडर्ड 14th में हैं, यानी FY BCom, SY BCom या TY BCom, तो साइमल्टेनियसली हम लोग ऐसा क्या कोर्स करें ताकि हमारे ग्रेजुएशन के साथ हमारे पास एक कोर्स साथ में हो, तो हम कहीं जाएं, अप्रोच करें तो हमारा CV वैल्यूएबल हो। तो एनी थॉट्स ऑन दैट? Actually, I have already spoken on this, that Okay. along with your graduation, you need to do some course, and then I showed them the option of they can do either CA or cost accounting or company secretary course. Other than that, Okay. there will be many, say for example, computer courses which are there locally available, depending upon the area of in which the student is staying. So these short-term computer courses on basics, say for example, Excel training, Tally training, these are something which you can do along with your graduation in commerce. Agreed. And Power BI or maybe AML, Yes. ये सब Udemy पे काफी courses available हैं. Yes. तो yes. So people, there is an exhaustive list. In fact, I will say that if the students are doing the courses which I have mentioned, it is going to be helpful to them in their BCom also, because awesome. Okay. knowledge base is common among these courses. Achha. So once you are upgrading your knowledge in one area, it is automatically useful to you in the other area also. So if suppose a student is doing his cost accountancy along with his graduation, it is going to help him in his graduation also. He will be a notch above, one step ahead of his other colleagues in his class. So they should do something along with their graduation. Only doing graduation in commerce is a criminal waste of time. Criminal waste of time. That's spectacular choice of words, sir. Criminal waste of time. Just if you're doing only BCom. मतलब आप जब BCom का, जैसे सर ने बताया ना, criminal waste of time, ये मतलब आप जब BCom से निकलेंगे ना बाहर, आप बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में होंगे, क्योंकि आज का जो जिंदगी है, कोविड के बाद की जो जिंदगी है, वहां पे स्किलफुल लोग चाहिए हैं। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है और स्किल्स नहीं आप साथ में ला रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी लाइफ। सो थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा आपने एम्फसाइज किया वर्ड क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम बोल के। सो थैंक यू। So it is a very good word. मोहम्मद इस पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली स्टूडेंट्स जो क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम, हमने भी बहुत वेस्ट किया इस पे टाइम। एंड देन हमारे जमाने में ऑप्शंस नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी ना। एग्जैक्टली। सो इसमें और एक इंटरनेशनल साइट है edX बोल के, वहां पे आपको एक कोर्सेज की लिस्ट है बहुत, मतलब वहां पे MBA से लेकर edX, could you spell it? edX, सॉरी जफर भाई। EDX मतलब प्रॉपर EDX करके है। यहाँ पे ये ऐप EDX आप डाउनलोड कीजिए, इसमें सारे कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ उसके करिकुलम पढ़ने हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप उसको रजिस्टर करके फिर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तब आप फीस पे कीजिए। मैंने खुद ने किया था फिनटेक एथिक्स एंड रिस्क के अंदर। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो आप किसी ने, हसन भाई ने लिंक भी भेज दी है, हसन भाई ने लिंक पेस्ट किया है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि हमको पूरी सेमिनार वेबिनार का लिंक चाहिए, तो ये वेबिनार हमारे अनफाल फाउंडेशन के YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां पर जाके इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और हमारी फीडबैक की एक लिंक दी गई है, प्लीज आप लोग उस लिंक को फिल करें ताकि हमें मौका मिले इससे बेहतर डिलीवरी देने का, ताकि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लाके दे सकें। सो अगर सफदर भाई क्या सिचुएशन है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या Yeah, absolutely. I think we can proceed. There are many questions actually that we are getting, some very interesting ones. A question from Aman is so he wants to migrate to USA and he is asking, what should I pursue, a CA or a US CPA? What will be better in order to migrate to USA? So if your long-term plan is to move to the United States, a CPA US would be a beneficial option for you, because at the end you would want to have that signing authority if you are doing your chartered accountancy course, and a CPA in US has that signing authority. A CA which is based out of the ICA, which is the Indian Institute, would not be able to sign any documents in the United States. So if your long-term goal is to move to the United States, a CPA US is a better alternative. Perfect. Thank you, Bhai. Thank you.
जस्ट टू ऐड ऑन मोर, ये जो इंटरनेशनल कोर्सेज के अगर आप लोग बात करें यूएस से बहुत सारे साइनिंग अथॉरिटी, सीएफई की भी अगर मैं बात करूँ, सो इवन इफ नॉट एन अकाउंटिंग फील्ड, अगर आपको सीएफई करके अगर यूएस में जाने के लिए सेटल होना है, सीपीए प्लस सीएफई, आपको फॉरेंसिक डोमेन में वहां पे आप खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हो, तो यू आर अ साइनिंग अथॉरिटी फॉर बोथ. Got it. Nice. Perfect. So एक similar question था, again it's a cross comparison across courses. So question है, I'm currently studying in class 12. I have chosen to do BBA and MBA in future. He's trying to understand whether an integrated course of BBA and MBA offered by IIMs should be preferred or should he go for separate courses? If given a choice, an integrated course would be helpful. There are a lot of such courses that are now available, especially with the IIM Indore and the likes of Lucknow and all of them. And if you can manage to stay away for 5 years from your house, because these integrated courses are residential courses, you would have to be at campus for a period of 5 years to complete that. So if that's a possibility, you should obviously prefer these integrated courses because it helps you clear the bottleneck. Agar aapko graduation ke baad agar masters karna hai, which is MBA from IIM, you have to clear the CAT exam, and the cutoff for CATs generally has been in the range of 99-98%. So it then slightly becomes difficult. Integrated courses just help you to clear that barrier. Thank you. Thank you, Mohammed Ali bhai. Another question is on, can we do MBA in dual course like marketing and finance? Yes, that's also a possibility. You could have dual specialization. You could do marketing, finance. You could probably choose strategy as your second specialization. Yeah, that's a possibility. Perfect. Yeah. Okay, all right. So moving on, next question we have is from Safir Abbas. I am working accounts professional with UK company. I wish to do ACCA and CPA, but these courses are expensive. Do they provide any scholarship? ACCA and CPA, I don't believe they have scholarship options. So you could have a look at CFA if that's an alternative that you want to consider. Or probably you could look at organizations which support education. So a lot of organizations have now started sponsoring education for their employees. I remember a lot of my colleagues from the Big Four accounting firms have got their tuition fees reimbursed by their organizations. So if you're really keen to, do CPA UK or ACCA or a CPA US, might as well consider moving into organizations which support your education aspirations. Awesome. This is awesome. So let me add a little bit. So I worked in this company called Accenture. So once you have spent a year in that organization, based on what level, career level you are on, company offers you certain programs where you can enroll yourself, and companies pays for it. So there are several hundreds and hundreds of programs available where your company, your company with whom you're working, they finance you so that you upgrade your skills and you move up the ladder. So yeah, that is an amazing addition there, Mohammed Ali bhai. Thank you. Perfect. So, yeah, a lot of companies are doing that in nowadays. Sorry, yes, Zaffar bhai, please proceed. Yeah, thanks a lot. So next question is, so this is from Ali Raza Ali. Sir, I am doing CA course, but I am confused about the experience and exposure. Where to do the article shape, like in Big Four or under any chartered accountant at a small level. He's also asking advice on whether he should first work in a company and gain knowledge about the industry so that later on he can have something like his own office. So basically question is on where should he work to get the experience before, like, in order to gain the overall knowledge. I would take that question. It basically depends upon the student, whether he is looking for a corporate job or he's looking forward for his own practice in the future. If he's looking for his own practice in the future, then I would suggest that he
not necessary that he should go for Big Four. But if he's looking for a corporate job, then he should go for the Big Four. And in fact, the CA course itself will allow him that, in, say, for example, 1 year, last 1 year, he can take up industrial training directly in any company. And as far as the new, suppose the scheme of education which is going to come, suppose within the next 1 year, a person who is opting for a job directly, he just wants to work in the corporate, for him, even the articleship period is going to be reduced by 1 year. So it basically depends upon you what you want to do. My suggestion is that you look at the opportunity which is available to you. Got it, Ashfaque. So that's a great answer. Actually, it provides clarity based upon whatever the applicant is really looking for. Thanks a lot for that. The other question I'm getting is just give me a second. So yeah, so this is coming from about FRM. So want to know more about the FRM course as such. I know we had already talked about it in the deck, but in case any speakers want to provide some more details, I think that would help. So I'll just explain the course in brief once again. FRM, you can start after your 12th standard, and it has 2 levels. Both these levels you can prepare simultaneously. साथ में आप पढ़ सकते हैं, साथ में वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं. बट उसका इवैल्यूएशन कुछ इस तरह होता है कि आपका लेवल 1 पहले इवैल्यूएट किया जाता है. अगर आप लेवल 1 क्लियर होते हैं, उसके बाद लेवल 2 इवैल्यूएट किया जाएगा. एंड दोनों लेवल में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. पहले लेवल में आपको 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, दूसरे लेवल में 80 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. Talking from a career standpoint, the risk management entire vertical itself is huge. Zaffar भाई ने भी काफी सारी रिस्क के बारे में बताया हमारे को. So the scope and the avenues for FRM is great. Thank you, Mohammed Ali bhai. Another question is, what will be a better start after 12th standard, BAF or BBI? I would suggest the student takes up his aptitude test and then bases his decision based on the results of the aptitude test. So yeah, I would also like to add here. So BAF and BBI का confusion मैंने भी देखा. मैंने भी BAF complete किया था 2009 में. हम लोग ने भी पूछा कि BAF और BBI में क्या difference है. So BAF is completely on the accounting side. अगर आपको आगे जाके towards थोड़ा मतलब exposure towards the chartered accountancy की तरफ ले जाता है, where banking and insurance is purely banking. Although Ashfaque sir ने clearly mention किया है कि इन सब में कोई differences नहीं है, सिर्फ certificate सब जो content है, जो scope है studies का, वो difference है. ये accounting की बात करता है, वो banking and insurance. Let's say future में आपको insurance side पे job करनी है या बैंकिंग साइड पे, जैसे मैंने छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स बताया, ये उस तरफ ले जाता है. उसके बाद आपको एमबीए के ऑप्शंस होराइजन ओपन होते हैं, सीएस होते हैं एंड बहुत सारे और है. इसके बाद भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हो. सो इट इज जस्ट टू ऐड, इट इज बीबीआई इज लिटिल थ्योरेटिकल, बैफ इज लिटिल प्रैक्टिकल. इतना मेन डिफरेंस इन दोनों के एलिमेंट में है. एंड सिमिलर दूसरे कोर्सेज भी अवेलेबल, जैसे कि कोई फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ जाना चाहता है तो बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स एक बैचलर्स के कोर्स अवेलेबल है. I hope I was able to answer. Yes, Zaffar, thanks a lot for that. There are various other questions that are being added in the chat. बहुत ज़्यादा details उनके पास मतलब questions में available नहीं है. So it's not very like very specific questions. These are all generic questions. So I will request the speakers कि in case you see any other questions which are like very straightforward, you can also like give the answer in the chat window as well. Also, Anwar bhai wanted to check with you. Do we need to like proceed ahead, or should we go ahead and wrap the session in the interest of time? It's already 9:30 actually. Excuse me, sir. Can I speak up, please? Yeah, please. So my question is, my interest is in hotel and all, like a restaurant. So doing an MBA and after that in hotel management is good because I think I would get a field. Because if
I'm not able to do then hotel management. So MBA would be like a startup, and then I could I can according to my knowledge, if I'm not doing hotel management, then I can do something else, or I can directly do hotel management. My only question is that, and is 70% a good score in 12th? And what about business? Some knowledge about business, a startup, or something like that, please. Too many questions. What in Yeah, hotel I'm sorry. management? Thank you. Uh, Actually, opening a hotel, opening a restaurant, basically, type of. सो मोहम्मद भाई थोड़ा क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा इसमें. सो बेसिकली सुरूर, यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके एक रेस्टोरेंट खोलना है, एंड देन आप बोल रहे हो एमबीए. सो आपका थॉट मुझे लग रहा है कि आप रेडी कंफ्यूज हो. आपको एमबीए करके आपको बिजनेस से आइडिया आएगा कि मुझे बिजनेस कैसे चलाना है, या फिर मैं होटल मैनेजमेंट करूँ कि मुझे होटल कैसे चलाना है. सो इट इज अ वेरी, Exactly. हाँ. सो एग्जैक्टली आपका जो कंफ्यूजन है वो सिंपल है. आप होटल मैनेजमेंट की तरफ अगर जाना चाहते हो, वहीं पे आपका सारा बिजनेस भी कवर हो जाता है कि एग्जैक्टली वो लोग क्या, बिकॉज आप अगर एक होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हो तो आपको उनके इनसाइट्स भी दिखाए जाते हैं कि आप वहां पे क्या रेस्टोरेंट में क्या प्राइस रखोगे, एक पर्टिकुलर डिश का क्या कॉस्ट होगा एंड ऑल दैट, वो आपको वहां पे ही सिखाया जाएगा. और आपको कस्टमर्स जब एंटर करते हैं तो उनको कैसे किस तरह से उनको डिशेस सर्व करनी होती है, वो सब वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. एमबीए करके आप उसको एडेड एडवांटेज, जब आपको फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है लाइक जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो जाता है, तब वो आप उस तरफ एम कर सकते हो. बट फिलहाल आपके लिए होटल मैनेजमेंट सही रहेगा. बट फिर भी अगर आप एज अ बैकअप क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए कि नहीं आई वांट मोर नॉलेज, डेफिनेटली पढ़ाई आप कोई भी करो आपको एडेड एडवांटेज देगी आपको, बिकॉज एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा. Over here, I would just like to add a word of caution for those who are planning to take up the hotel management course. Please go through the course content. As per my knowledge, whatever course content is there in hotel management, it is involving, some things which may not be allowed for us from a Shari point of view. Like, say, for example, studying the serving of pig, preparation of pig, and suppose wine and everything. So please do check out. And I don't think that any hotel management course is there which will offer you, a very safe, halal way of studying it. To So skip these great. things. Absolutely, absolutely. Do it at your own Yeah, risk. absolutely. Yeah. Thank you so, And, thank you and so much. in my Appreciate career, it. yeah, in my Appreciate career, it. I've never seen a single person completing that hotel management course. But yeah, there could be many. But yes, thank you, sir. That was a great point. I think so. This was helpful. So people, we already have a lot of questions. We will answer you on this. This entire webinar has been recorded and is also available on our YouTube channel. So, Safdar bhai, could you also paste the YouTube channel link so that people can go and ask question and get information? Yes, I think we have already answered that question. So yes, you will find that information on our webinar link. So we will share that webinar link. Also, we request people, the participants, to please fill in the feedback. The feedback link has been given. It's very important for us so that in future, we can be better. So if you, it's like you help us to help you all. So yeah, thank you so much. I think we can quickly wrap up. I'm thankful to Ashfaque sir, Mohammed Ali bhai, and Jivani bhai, Zaffar Jivani bhai. I'm thankful to the entire backend team, Safdar bhai, OS bhai, entire education team who have been tremendously working on this entire thing for last 1 week and a little more than that. So yeah, and very soon we will come up with a new webinar. The links are available. Please join our Anfal channel web broadcast, where you can find all the upcoming events information, and you will be in touch. Also, like and share us on our channel on YouTube. Lastly, Anfal Foundation is a Sadqa-driven organization where your contribution, your little contribution, your little contribution, which is just give it away to a beggar, जो हम चलते फिरते beggar को दे देते हैं, जो हो सकता है कि एक माफिया और एक syndicate का आदमी हो, जिसको वो 1-2 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता है, they are into something big. ये जो छोटा सा जो सदका है वो हम लोग चैनलाइज करके बड़े बड़े काम करते हैं. आप हमारे अनफाल फाउंडेशन की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कि हम किस तरह के काम करते हैं और किस तरह से कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो अगर आप लोग सदका देना चाहते हैं तो सदका का लिंक भी अवेलेबल है. यू कैन ऑल्सो गेट अ सदका बॉक्स और अ सदका QR कोड. Apart from that,
This is your host Anwar Hussain signing off for today. You guys have a great day ahead. Thank you so much for joining us. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी देर रुका, आपने सोचा